হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ আৰ্ট অফ লিভিং আশ্ৰমত। এই আৰ্ট অফ লিভিঙত চলি আছে নৱৰাত্ৰি পূজা। এই নৱৰাত্ৰি পূজাৰ দৃশ্য মোৰ লগত সতীৰ্থ আছে, সতীৰ্থই দেখুৱাব। যিহেতুকৈ সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা, এই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ কেনেদৰে চলি আছে আৰু এই বিষয়ে মই অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই আৰ্ট অফ লিভিঙৰ যি আৰ্ট অফ লিভিং আশ্ৰমৰ যি গুৰুজী আছে, এই গুৰুজীৰ পৰা মই কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ আগত এইখন যে নৱৰাত্ৰি পূজা চলি আছে তাৰে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। হয়, মই পোনে গৈ আছোঁ এইখন আৰ্ট অফ লিভিং আশ্ৰমৰ যি গুৰুজী আছে, গুৰুজীৰ পৰা অলপ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, এইখন যি নৱৰাত্ৰি পূজা চলি আছে কিমান দিন চলিব আৰু কেনেদৰে কি পৰিস্থিতি? নমস্কাৰ, মই ব্ৰহ্মচাৰী অচ্যুত। আপোনাৰ চেনেল মাধ্যম জৰিয়তে সকল দ্ৰষ্টাসকলকে অসমবাসীৰ সকল নাগৰিকে मैं नवरात्रि हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करिशु। अभी हमारे आश्रम में 9 दिनात्मक नवरात्रि उत्सव चल रहा है और वैदिक रीति नीति के हिसाब से हम लोग इस बार घट स्थापना करके माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। हमारे वैदिक आचार्य और वैदिक विद्यार्थी हैं। जैसे पहला 3 दिन तमोगुण की और उसके बाद जो 3 दिन वो रजोगुण की और आखिरी जो 3 दिन वो सत्व गुण की, ये त्रिगुणात्मक। और ये जो संसार है ये 3 गुणों से बना है। और देवी की जो 9 दिन नवचंडी बोलते, नवदुर्गा बोलते हैं। आज जो दिन है, आज ब्रह्मचारिणी, पहला दिन शैलपुत्री, आज ब्रह्मचारिणी। ऐसे अलग अलग दिन में कभी चंद्रघंटा, कभी कुष्मांडा, ऐसे देवी माँ की पूजा होती है। और जिनका सुविधा है, सक्षम है, देवी का मृण्मय मूर्ति में भी पूजा करते हैं और शास्त्र में घट स्थापना से भी आप पूजा कर सकते हैं। और ये सारा पूजा का उद्देश्य है जन कल्याण और सारा विश्व में शांति और सबका मंगल हो, परिवेश की सुरक्षा हो। तो परिवेश को, पर्यावरण को सुरक्षा दृष्टि से हम लोग जितना निराडंबर हो सके और वैदिक परंपरा के हिसाब से पूजा कर रहे हैं। और जो आप ये नवरात्रि पूजा मतलब घट पूजा, इसमें जो पानी लाता है ये क्या क्या करता है? हाँ, नवरात्रि पूजा जैसे मूर्ति से भी पूजा होती है, ऐसे घट स्थापना करके, मतलब जो सूक्ष्म शक्ति हैं वो जब आवाहन करते हैं तो जल तत्व में विराजते हैं। तो हमारे पास में जो पवित्र नदी है, टिपकाई नदी से हम लोग जल संग्रह करके घट में लाके स्थापन किए और वैदिक मंत्रों से आवाहन करके पूजा पाठ प्रारंभ किए हैं। और जैसे देवी माँ की विसर्जन होती है, उसे दशमी के दिन घट को भी हम विसर्जन करके जी आमार आर्ट ऑफ लिविंग आश्रमत गट पूजा चलि आछे। এই गट पूजार বিষয়ে ইতিমধ্যে মই মন্তব্য লৈছোঁ। আৰ্ট অফ লিভিং আশ্ৰমৰ যি গুৰুজী আছে, গুৰুজীৰ পৰা মন্তব্য লৈছোঁ। এই গট পূজা ভালদৰে চলি আছে আৰু এইখন আৰ্ট অফ লিভিঙৰ যি যেনে পৰিস্থিতিত চলাব লাগে ইয়া ভালদৰে চলাই আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে এই আৰ্ট অফ লিভিঙৰ যি গুৰুজী। নমস্কাৰ, মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব আগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে।